Namaste. Today's session is a part of my whole writing. Okay? एक पूरा complete writing on this topic जिसका एक छोटा सा पार्ट आज मैं आज सेशन में कवर कर रहा हूँ. So I will be using my papers for the reference in between. Okay? यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको अपना इनर स्टेट मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होता है? अपना इनर पीस मेंटेन करना है, अपना जॉय मेंटेन करना है, हैप्पीनेस मेंटेन करना है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है. वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आती है. There are lots of people. Generally, we all face the problems in maintaining our peace, our joy, our happiness. Right? ये प्रॉब्लम्स आते क्यों हैं? अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा आंसर मिलता है. क्या मिलता है? कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला, इसीलिए मुझे गुस्सा आया. उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इसीलिए मुझे हर्ट हुआ. उसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था. He has done this wrong. Generally, we hold the other person responsible for all the problems we are facing. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. उसने तो एक्शन कर दिया, मगर जो भी बाद में हो रहा है, दिस इज ऑल आवर क्रिएशन. ये सिर्फ हमारा क्रिएशन है. चलो इसको और अच्छे से एग्जांपल देके मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज एक पर्सन कार ड्राइव कर रहा है. इफ समवन इज ड्राइविंग द कार, who is the best person to control that car? The person sitting on the driving seat, or the person sitting beside, or person sitting at the back? अगर कोई कार चला रहा है तो कार को सबसे अच्छा कंट्रोल कौन कर सकता है? जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो, या जो बाजू में बैठा है वो, या जो पीछे बैठा है वो? एग्जैक्टली, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है. जो ड्राइवर सीट पे बैठा है वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु कैन कंट्रोल द कार बेस्ट. राइट? चलो एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, या एक और बेटर तरीके से इसको समझते हैं. सपोज एक नई कार मार्केट में आती है, नया मॉडल मैन्युफैक्चर होता है जो आज तक कभी नहीं था. राइट? हु इज द बेटर पर्सन टू नो एंड अंडरस्टैंड all the minute technical details about that car? Of course, it's the manufacturer company, correct? जिसने वो कार बनाई है वही पर्सन या वही कंपनी है जो उसके सारे टेक्निकल डिटेल्स को जानती है या समझती है, करेक्ट? एंड दैट इज द बेस्ट पर्सन टू इवन रिजॉल्व एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स दैट कम्स इनटू दैट कार, करेक्ट? राइट? यस. अगर उस कार में कोई भी डिफिकल्टी आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनी ही उस टेक्निकल डिटेल को प्रॉपर्ली रिजॉल्व कर सकती है या सॉल्व कर सकती है. मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी क्या? यानी दैट टीम ऑफ पर्सन हु हैज एक्चुअली मेड दैट कार. वो टेक्निकल टीम है, या वो टेक्निकल टीम ने जिस किसी को भी ट्रेन किया है वही ये लोग कर सकते हैं, करेक्ट? नाउ we will connect it with our original thing. Suppose if someone is taking an action, say by using some words, by saying some words, or by behaving in a particular way, right? The action is taken by that person, but on that action, what action has to be taken or what reaction has to be taken, ये कौन डिसाइड करेगा? The person or the self who is taking that action or reaction. Means हम लोग, ourself is the one who is going to decide about it. Why? Because we are the creator of it. It's we who create it, and that's why we are the controller of it. So everything of this is our creation. Now, the other person has said, behaved or acted exactly the way he supposed to. उसने जैसा करना चाहिए था वैसा उसने बिहेव कर दिया है,
मगर अब उसके बिहेवियर पे, उसके वर्ड्स पे, उसके एक्शंस पे क्या एक्शन देना है, क्या रिएक्शन देना है, दैट इज अप टू अस. As we being the creator, it is our choice or it is our will or wish to decide what to do. But our action or reaction is decided by the thought process is working behind it, or more specifically the belief system which we have developed. Okay, on the basis of the belief system we have developed, how it depends how we take the other person's actions. जिस तरीके से हम लोग अदर पर्सन के एक्शन को लेंगे, the way we take the other person's actions is the way we are going to react or act on it. जिस तरह से हम उसके एक्शन को लेंगे, उसी तरह से हम लोग उसके ऊपर एक्शन देंगे या रिएक्शन देंगे. It all depends upon the way you take, and the way you take it depends upon the belief system which you have developed recently. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी से कि if someone has done any action, so it's your choice. Depending upon the belief system, we decide the action or the reaction. Whether to get angry, to get sad, to get hurted, to have the pain, or to deal with it peacefully, joyfully, and with happiness. It's all depend on us. To say it in other words, if you create hurt out of it, you will get hurt. If you create pain out of it, you will get pain. If you create anger, frustration or irritation out of it, you will get anger, frustration or irritation. And if you create learning or understanding out of it, you will be able to learn or understand it more better. If you create calmness or peaceness out of it, what you create is a calmness or peaceness. If you create motivation or a driving force out of it, you will get a motivation or a driving force to perform. So it's all depends upon the creator. The one who create will decide what to be done. It's all depends upon the creator. You being the creator, you can control your creation anytime. It means you can channelize it the way you want. You can stop it at the time you want, and even you can destroy it at any time when you want. So it's all your creation, and that's why you have the full control on it. Now, the important question: how will you regulate your creation? Regulation depends upon the level of acceptance. To regulate, first you need to accept it. Unless and until you accept yourself, you will not be able to regulate your creation. So first you have to accept yourself, then you will be able to regulate. Now, accepting self. Once you start accepting yourself, then you will be able to start accepting the others and even the surrounding around you. That is also equally important. Unless and until you accept yourself and then you accept the others on and even surrounding around you, you will not be able to regulate your creation. Let's explain this using an example. Suppose if you want to control a car, what will you have to do? You have to sit into the driving seat of the car, and then you can control it, right? Can you control a car
बाय जस्ट स्टैंडिंग आउट ऑफ द कार? क्या आप कार के बाहर रह के कार को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं, यू हैव टू सिट इन टू इट। आपको कार के अंदर ड्राइविंग सीट पे बैठना पड़ेगा, तब जाके आप कार को कंट्रोल कर पाओगे। करेक्ट? अगर कोई खिलौना है, उस खिलौने को आपको कंट्रोल करना है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज करना है या उसका फोर्स बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू होल्ड इट, उसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, फिर उसको जैसे चाहिए वैसे आप टर्न कर सकते हो। करेक्ट? Moreover, if you want to control your mobile phone by keeping it at a distance, you can't control it, you can't operate it. कंट्रोल करना है यानी क्या? ऑपरेट करना। अगर इसको ऑपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हाथ में लेना पड़ेगा एंड देन ऑपरेट करना पड़ेगा। राइट? सो यू हैव टू टेक इट, होल्ड इट एंड देन you can operate it or control it. This is nothing but the acceptance. If you want to regulate something, if you want to do some changes or regulate something, first you have to accept it. Same way, if you want to regulate your creations, then first you have to accept that creation, and even you have to accept the situation. आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके उस सिचुएशन को भी आप चेंज कर पाओगे, रेगुलेट कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? सिचुएशन को अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना टफ रहता है। फिर भी सपोज वी हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, बट एट द सेम टाइम उस सिचुएशन जिस पर्सन की वजह से आई है, ऐसा हम लोग फील करते हैं, उस पर्सन को एक्सेप्ट करना, उस सराउंडिंग को एक्सेप्ट करना, दैट इज द टफेस्ट टास्क। मेनी ऑफ अस विल टेल और नॉट एग्री विथ मी, राइट? कोई एग्री नहीं होगा, कोई बोलेगा कि हम गलत कैसे एक्सेप्ट करें, उसने गलत किया वो कैसे एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, बट उसने गलत किया है ये किसने डिसाइड किया? आपने। राइट? यू हैव जज्ड इट दैट ही हैज डन रॉन्ग। उसने गलत किया, ये किसने जज किया? ये आपने जज किया। पर क्या आप जानते हो या समझते हो कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी सिचुएशन को समझते हो? क्या उसकी लाइफ को समझते हो? क्या उसके थॉट प्रोसेस को समझते हो? क्या उसके बिलीफ सिस्टम को समझते हो? यू कांट बेट ऑन इट। आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। कई लोग शायद ये मानेंगे और या कहेंगे कि हम लोग तो उस पर, यस हम लोग जानते हैं क्योंकि मैं उसके साथ रहती हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी, मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं जानता हूँ वो किस तरह से सोचती है, उसकी क्या बिलीफ सिस्टम। बट इट्स ऑल नॉट फुल्ली करेक्ट और राइट, क्योंकि किसी भी पर्सन के बिलीफ सिस्टम या बिलीफ्स जो होते हैं वो उसको खुद को कई बार पता नहीं होते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उस पर्सन को जज करने के लिए हम लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं मिली। राइट? वी आर नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन टू जज द अदर। भगवान ने हमको अथॉरिटी नहीं दी है, या बेटर टू से वी हैव नॉट गॉट दैट अथॉरिटी फ्रॉम द क्रिएटर टू जज दैट पर्सन। उसको जज करने का अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। क्या हमको जज करने का रोल मिला है? नहीं। So how we can judge the other person? Getting my point? So कौन से दो चीजें हैं? First, we are not here to judge the other person. Secondly, we doesn't understand that person's perspective, belief, और to be precise, जैसा मैंने बोला कि वो किस सिचुएशन में है, उसकी लाइफ कैसी है, उसके बिलीफ सिस्टम क्या काम कर रहे थे उस टाइम पे, उसका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, ये हम लोग नहीं। दूसरा क्या सोचता है, क्या हम लोग ये समझ पाते? नहीं समझते। अगर आपको लगता है तो भी गलत है। चलो एक चीज़ का आंसर है, क्या आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं? देखो कई बार ऐसा कई बार ऐसा होता है, चाहे सबके साथ हो चाहे कुछ लोगों के साथ हो, बट कभी ना कभी सबके साथ तो ये एक बार होता ही है। क्या हुआ होगा या क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे हो गया, मुझे पता नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता था मगर मुझसे हो गया, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, यार ये मैं सोचना नहीं चाहता हूँ मगर बार बार सोच आ रही है, मैं ये नहीं चाहता हूँ मगर ये हो रहा है।
मुझे निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, मेरे मन में ये निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, मगर आ रहा है, राइट? इट मीन्स दैट इवन वी डजंट अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर, क्योंकि वो क्या चीज़ है, वो कौन सा बिलीफ है जो अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर या अपने एक्शन के ऊपर काम कर रहा है, ये हमको खुद नहीं बताता है। बिकॉज बिलीव्स बनते कैसे हैं? बिलीव्स आर बिल्डेड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस यू हैव इन योर रूटीन। आपके रूटीन में जो बिलीव्स एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं उस बेसिस पे बिलीफ बनते हैं। सो इसीलिए हम लोग भी खुद अपने बिलीव्स के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। वी आर अनअवेयर ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम फुल्ली। इफ we understand ourselves, our belief systems fully and completely, then we will never have a complaint कि no one understands me। और जनरली ये कंप्लेन होता है हमको कि वो मुझे समझता नहीं, राइट? इट मीन्स दैट वी डजंट अंडरस्टैंड ourselves fully and completely। अगर हम लोग अपने आप को, खुद को पूरी तरह से और अच्छे से समझ जाए तो दूसरे को समझने की, दूसरा हमें समझे या ना समझे, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। And we will not have that complaint. If we understand ourselves fully and completely, we will never have a complaint that the other person is not understanding me. Why? Because we are the one who understand ourselves better. और जब हम अपने आप को अच्छे से समझ लेते हैं, when we understand ourselves better, we will act accordingly. Right? Act accordingly यानी क्या? We will make it sure that our point of view is being expressed in the way the other wants, and we will make ourselves more understandable. Clear? The key aspect is understanding ourselves, understanding about the self. This is the key and the most important aspect of our life. Even many of the spiritual gurus, rather say all the spiritual gurus or teachers, have always said that journey of the spirituality or journey of the life, true journey of the life begins with one's self-understanding. अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग से ही अपना ट्रू जर्नी, रियल जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं, if we say that we understand ourselves, it's not true completely. We understand ourselves, yeah, but it's on the surface level. It's only on the surface level. हम लोग अपने आप को सिर्फ ऊपर ऊपर से जानते हैं, अंदर से नहीं समझते। अंदर से समझना ये बहुत बड़ी जर्नी है। It's a part of journey, or it's a journey, rather it's a journey, right? जैसे जैसे आप एक एक लेवल को समझते हो, once you start understanding yourself at one level, you will see the other level is already there. You go and understand the one level, then you say, oh, there is another level. You go even more deeper. You keep on going deeper and deeper while understanding yourself. And this is the journey. And this is why it is known as journey, because it keeps on going level and level, more and more deeper. Getting it? As you start exploring yourself, you will go deeper and deeper about understanding yourself. And once you start understanding yourself, it will help you in changing or shifting you towards your uplifting. जैसे जैसे आप अपने आप को समझते जाते हो, एक एक लेवल और डीपर जाते हो, वैसे वैसे आप अपने आप की हेल्प करते हो या सपोर्ट करते हो, एंड इट लीड्स टू, यानी ये आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने की तरफ लेके जाता है। कई गुरुओं ने, कई टीचर्स ने, कई ग्रेट वंस ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग अ सेल्फ, और अदर सेल्फ, खुद का डेफिनेशन अगर देना है, टू नो योर सेल्फ इज जस्ट अ सिंगल वर्ड। एक वर्ड में अपने आप का हम लोग बता सकते हैं, बट व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड इट,
when you want to explore it, it's a journey. It's a journey. And many of us are already on that journey, and some of us are yet to begin their journey of self-understanding. What is a self-understanding? Self-understanding means knowing what you are, knowing who you are, knowing from where you have came, knowing where you have to go, knowing your life cycle, knowing the purpose of your birth, your life, for what reason you are here. These are some of the levels I have known by reading or understanding the knowledge I have got. But there are many more layers. Okay? So to summarize, in short, is that you are the sole creation of your actions or reactions. So to summarize, finally, it's that you are the sole creator of your actions and reactions. Your actions and reactions are your creation, and that's why you are into the full control of it. Right? The other person acts the way he or she is supposed to, but how to react or what to react or what to act or how to act on it, it all depends upon you. You are the one who decides it, and decision is being taken on the basis of the belief system you have developed. Right? And to understand your belief system, you have to first understand yourself. Once you start understanding yourself fully and completely, then you will be able to understand your actions and reactions. But to regulate your actions and reactions, what is the key factor? Is the acceptance. And even for understanding yourself, what is the key factor? Is acceptance. Unless and until you accept yourself, you will not be able to regulate it.